अमिता मेहर मृत्यु घटना वर्तमान बीजेपी तरफ प्रेसमिट आयोजन करा सीधा प्रसारण आम देखु Not on the political angle. Just we would like to tell you about the doubts or the suspicion of any common man they have. The constituency being represented by the present MOS home, Mr. Dibya Shankar Mishra. The accused of the present criminal case, Govind Sahu, is not a close aide of the Home Minister. And he is not only the close aide, and he is being seen as the representative of the Home Minister in that region. Often they were travelled together. Often the Home Minister, he had visited that school. Even the financial assistance from the MLA fund is being given to that school. We have got some information. And the accused of the present criminal case, who has visited Chief Minister's residence along with the Home Minister several times. It is all in the public domain. Initially, when the girl's parents, they have approached the police station to lodge an FIR, they have been dragged by the police department. And after investigation, Govind Sahu was interrogated for 3 days. But surprisingly, an unscheduled power cut has happened in the police station. He escaped. Then after that, the police has secured him. And now the DIG has given a press statement saying that it is some kind of a personal thing. And Govind Sahu has confessed that the victim has threatened him of exposing some kind of a relationships. Yesterday we also met the Superintendent of Police, Balangir. Our team and other local public representatives, we have met him. We have raised our doubts. Yes, of course, for some questions he has answered. He was telling that some of the body parts were handed over to the family of the victim, and some objects have also been given back. We were asking him about the forensic report. That is still pending. Media friends, I would like to tell you, investigation officer is under the Home Department. The constituency where the crime has occurred, it comes under the Home Minister. The accused, he is not an ordinary citizen of that particular assembly constituency. He is being seen as the representative of the Home Minister. Everything comes under the Home Ministry. Now, taking the confession statement and conducting the trial is another step in getting the justice. But conducting the trial also involves the Home Ministry. The police department has to conduct a free and fair investigation, and another important thing, that trial has to take place. When everything is to happen under the Home Ministry, it is not only the political parties, community organization, general people, they are telling that there is some big hand in this present criminal case.
And in that situation, BJP Odisha unit is making a demand of removal of the Home Minister from the ministry. Repeatedly, they were demanding the state president, member of parliament and our state office bearers. कि जो उस बच्ची के जो रिमेन्स हैं वो फैमिली को दे दिए गए। अभी फोरेंसिक रिपोर्ट्स जो हैं वो आई नहीं है। उन फोरेंसिक रिपोर्ट्स की एब्सेंस में भी वो रिमेन्स फैमिली को दे दिए गए हैं कि ये आपकी बच्ची के ही रिमेन्स हैं। नंबर 5 कि जिस तरह से एक के बाद ये एक घटनाक्रम हो रहा है उससे ये सब नजर में आता है कि इस मामले की सीबीआई इंक्वायरी जो कि हमारी राज्य सरकार ने अभी तक इसके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है और जो हमारी राज्य की जो हमारी प्रदेश की जो हमारी इकाई है भारतीय जनता पार्टी की उसने इसके बारे में बार बार अपनी आवाज उठाई है। तो हम सबका भी ये मानना है कि इसके अंदर सीबीआई इंक्वायरी जो है वो जरूरी है और वो होनी ही चाहिए, क्योंकि होम मिनिस्टर साहब ने उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये हादसा होने के बावजूद परिवार से अभी तक मिलने की कोशिश नहीं की, परिवार के लिए सांत्वना के कोई शब्द नहीं कहे और जिस तरह का उनका हम लोगों की टीम के आने के बाद कल जो बयान आया है उसके बारे में भी आप लोगों को वानती जी ने अपनी बात कही है। सीबीआई इंक्वायरी और किस लिए जरूरी है, क्योंकि अगर कहीं कुछ ना कुछ इसके अंदर कोई षड्यंत्र है तो जो हमारी दूसरी बच्चियां हैं, जो हमारी दूसरी टीचर्स वहां पर हैं, उन पर किसी तरह की कोई आंच ना आए, कहीं किसी तरह के प्रेशर नहीं। इसलिए भी बहुत जरूरी है कि इस मामले की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और हमें पूरी उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात में पहल करेंगे और वो सीबीआई इंक्वायरी के लिए जांच के आदेश देंगे। ये सभी बातों को लेकर हम अपनी रिपोर्ट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को प्रस्तुत करने वाले हैं। जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं, जो हमारी रिकमेंडेशंस हैं और उसके बाद हमारा पार्टी नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा उसके बारे में आपको अवगत करवा दिया जाए।